Good morning, students. Good morning to all of you. We started with partnership accounts. But before starting partnership accounts, first I will quickly revise chapter number 6 and then this chapter number 8. So please, this session is very important. Before starting partnership accounts, today I want your 10 minutes. That 10 minutes will give you all entries, not related only to partnership accounts, but whatever I taught till today. I will not take first and second chapter, but I will take 6th chapter revision. Then we are going to start with 8th chapter revision. If you all are ready, should I take revision? Please tell me in comment section. Before that, I'm going to start with traditional rules as usual. So traditional rules, beta personal account, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And in case of modern approach, asset debit balance, liability credit balance, expenses debit balance, income credit balance, and capital credit balance. So beta, now if you are ready for this revision, I will take in 10 minutes full revision if you want. Good morning to all of you, beta. Ishan Beach, Bhargavi, Gunjan, Srinidhi, should I take this revision? Yes, many students are saying yes. So in chapter number 6, first we started with bill of exchange. Bill of exchange, if you remember, books of drawer and books of drawee. Books of drawer and books of drawee. So books of drawer means who draws a bill. Drawer is a person who sells goods, and drawee is a person who buys goods. So drawer has right to draw a bill on drawee. So first entry is a debtors account debit to sales. Second entry will be bills receivable account debit to debtors. After that, there are 4 conditions, 4 situations. Number 1, that bill is retained, no entry, bill discounted, bank account debit, discount account debit to bills receivable, bill endorsed, creditors account debit to bills receivable, and bill sent for collection is bill sent for collection account debit to bills receivable. On due date, what happens? On due date, honor or dishonor. On due date, honor hoga, so first entry will be bill retained, bank account debit to bills receivable, no entry for bill discounted, and endorse, no entry for honor. And in case of bill sent for collection, it is bank account debit to bill sent for collection. In case of dishonor, drawee account is always debited. So drawee account debit to bills receivable in first situation, drawee account debit to bank in the second situation, drawee account debit to endorsee in third situation, and drawee account debit to bill sent for collection is a fourth situation, my friend. After that, in case of drawee's books, first entry will be purchases account debit to creditors, creditors account debit to bills payable account debit to bank, and last entry will be bills payable account debit to creditors. So these are some entries for bill of exchange. Beta accommodation bill, if you remember X and Y, there are 2 entries in X books. In X books, first entry will be bills receivable account debit to Y, and Y passes entry X account debit to bills payable. After that, bill is discounted by the bank. 990 ka bill tha, so 990 ka bill discounted with the bank. So bank account debit 900, discount account debit 90, to bills receivable 990. And remember, there is no entry in the books of Y. After that, bill is cash is remitted to Y. So Y account debit 330 to cash 300 to discount is borne by the Y is 30. So discount is getting cancelled. In the books of Y, discount is debited. So cash account debit 300, discount account debit 32. Your X account is 330. On due date, 660 amount is sent. So Y account debit to cash 660, 660, and here entry will be cash account debit to X 660, 660. No entry in the books of X. After that, bill paid. So therefore, bills payable account debit to bank 990, 990. Ultimately, discount is rupees 60 is written by X, and 30 rupees discount is written by Y. So this is the accommodation bill. After that, we have seen the goods sent on consignment and goods sent on approval basis. Sorry, goods sent on approval basis. If you remember, there are 3 approaches. One is casual approach, second one is numerous approach, and the third one is frequent approach. Sorry, frequent is second, and third one is numerous. In case of casual approach, first entry will be debtors account debit to sales, but you are not aware about whether the sales are immediately when goods are sent, debtors account debit to sales. In case of bill accepted, no entry, but in case of rejection, sales account debit to debtors account. On due date, on 31st March, that is a cutoff date, not due date, cutoff date, entry will be sales account debit to debtors account, that is at selling price or invoice price, and second one is goods lying with customer account debit to trading account, cost on NRV, whichever is lower. After that, in case of 31st March, you have to compulsory pass this entry, and in next year, if goods are accepted, then you again pass entry debtors account debit to sales, and in goods are not accepted, then entry will be rejected, no entry for that. Frequently, you have 4 columns. One is goods sent, second one is goods approved, third one is goods rejected, and last one is a balance. And in under that, you have date, particulars, ledger folio,
and last one is a rupees. So 444. 12 columns plus last balance is only one column. In case of numerous approach, there is memorandum books and second one is normal books. So memorandum books you pass whenever you goods sent, immediately entry will be passed debtors account debit to goods sent or return basis. Okay, so goods sent or return, when goods are accepted, then you will reverse the entry sale or return account debit to debtors account. And in normal book, you are going to pass entry debtors account debit to sales. In case of rejection, there will be a sales or return account debit to debtors, and in normal books there will be no entry, and whatever the balance which is remaining in the goods sale or return account, that is remaining balance will show as goods lying with customer account debit to debtors account, goods lying with customer account debit to trading account at cost or invoice price, whichever is lower. So beta, these are very simple entries in case of goods sent on approval. After that, third chapter we have seen, that is consignment account. In consignment account, first entry will be goods sent on consignment account debit to consignment account debit to goods sent on consignment account. This is the first entry when goods are sent on consignment. Second entry, consignor incurred expenses. So consignment account debit to cash consignee incurred expenses, consignment account debit to consignee. Fourth entry will be sales bills receivable, bills accepted by consignee, so bills receivable account debit to consignee. Fifth entry will be sales made by the consignee, so consignee account debit to consignment. And next entry will be commission. Consignment account debit is an expenditure for us, so consignment account debit to consignee account. After that, profit or loss on consignment, so consignment account debit to P&L and P&L account debit to consignment. And after that, whatever balance is consignee में remaining होगा, so consignee account को से पैसा आ जाएगा, so bank account debit to consignee. And last entry will be stock on consignment account. Sorry, one entry remaining. Sorry, stock on consignment account debit to consignment. After that, you will calculate profit or loss, and last entry will be goods sent on consignment account debit to trading account. I hope you understood all these entries. If you are not understanding these entries, it means there is a need of revision, my friends. And if you are not revising in regular basis, it will be difficult for you after every 4 to 5 days. You please go through any chapter and please recall all these entries. Otherwise, you can see my video. This first 5 to 10 minutes will help you out for your revision purpose. In average due date, there is a formula base date plus total product upon total amount. And in case of there are two parties, X and Y, then plus or minus हमारा सिर्फ plus आएगा. Base date plus date, change in the difference in the product divided by difference in the amount is the second entry. And in case of that installment problem, date of loan plus number, that 3 plus 2 plus 1 divided by number of जितने installments आपके बाकी है 4 3, इससे आपका due date आ जाएगा. So that is a third case. In case of account current, there are three methods. One is a product method, interest method, and last one, sorry, balance method बोलते हैं इसको, and last one is a product and interest method. तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम्स में हमेशा एक ड्यू डेट, ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट से लेके स्टेटमेंट डेट तक हम लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं. उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट का डिफरेंस लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर, उसके अपोजिट साइड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 1 डे का, या इंटरेस्ट हर बार कैलकुलेट किया तो डायरेक्टली इंटरेस्ट हम लोग अमाउंट कॉलम में लेके उसका बैलेंसिंग करते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन. सो दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ अकाउंट करंट. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक. यस, आपको याद भी आ रहा है, ये बहुत जरूरी था. फर्स्ट 8 मिनट्स में देखो, मैक्सिमम 8 मिनट्स में हमारा रिवीजन हो गया. सो बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, मानवी खन्ना पूछ रही है कि डिवाइड बाय 12 क्यों किया. सो डिवाइड बाय 12 हम लोग इसलिए करते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि हम लोग इफेक्टिव प्रोडक्ट मेथड जब भी करते हैं, अकाउंट करंट को याद करो बेटा, हम लोग प्रोडक्ट मेथड के बाद 1 डे का इंटरेस्ट निकालते थे, सो 1/365 करते थे. वैसा ही यहाँ पे जब भी मंथ्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड बाय 12 करना बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स, yesterday only I heard some Dhoni thoughts. He was telling, okay, there is need of some process is very important to get results. If you are directly depend on the result, it will be very difficult for you. You won't get any result if there is no process. तो आप कभी भी ये याद रखना, प्रोसेस मतलब वो बता रहा था रिजल्ट इज ओनली अ बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट का मतलब उनको ये बोलना था कि रिजल्ट जो है ये एकदम सेकेंडरी थिंग है, ये बहुत स्मॉल थिंग है. यदि आपके प्रिपरेशंस अच्छे हैं, यदि आपके प्रोसेस अच्छी है, तो आपको रिजल्ट तो डेफिनेटली आने वाला है. आप बोलोगे कि मैं विदाउट प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, चलो मैं खेलने जाता हूं, तो वो नहीं हो पाएगा. सिमिलरली इन सीए कोर्स, आई एम टेलिंग यू, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. ये याद रखो. प्रोसेस मतलब क्या, आप जो ये क्वेश्चंस करते हो, सॉल्विंग करते हो, और यही आपको रिजल्ट लाके देता है. 3-3 4-4 बार सॉल्विंग करना. यस बेटा, एक सेकंड, एक ही मिनट, मैं सिर्फ मेरा लैपटॉप चेंज करता हूं.
चलो ओके सो बेटा सॉरी जरा मुझे थोड़ा लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा. गुड मॉर्निंग बेटा ऑल ऑफ यू. सर व्हेन यू आर गोइंग टू अपलोड. यस बेटा ये आज मैं अपलोड कर दूंगा. I had all problems of treatment of Goodwill. Very good beta Keshav Thakur. See, you are getting this benefit of revision classes or regular classes, and I'm taking your revision on day-to-day basis. But problem is that students are not very interactive. And suppose interactive means you have to give interaction in the comment section, but students are normally taking it very lightly, and that's why their results are getting fail. Okay, so many students, those who are very serious in their studies. Serious means kya sir? कि serious मतलब same problem sir solve करना है. सेम प्रॉब्लम आपको बार बार सॉल्व करना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है. इन मैथमेटिक्स ऑल्सो फर्स्ट क्लियर योर ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स. व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट अकाउंट्स, व्हाट कम्स टू योर माइंड, हाउ योर अकाउंट्स विल लुक लाइक. सो फॉर एग्जांपल यस्टरडे ओनली आई टॉक टू आवर बोर्ड ऑफ स्टडीज मैम कि हमारे टाइम पे और आपके टाइम पे कितना डिफरेंट है, कि हम लोग आपको कितना प्रॉपर सिस्टम देने की कोशिश करते हैं, आपका थिंकिंग लेवल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग इट एज पॉजिटिव थिंग्स. ठीक है, और बस करना है. अभी देखो आप में से yesterday I have given you homework. How many of you have completed? Please tell me it in the comment section. Sir, yes sir, I have completed all problems in fair. Yes beta, screenshots तो आपने ले ही लिए थे. And I tried all questions of Goodwill, because 5 days you have to devote only for partnership. I'm not telling you you devote this timing afterwards. Once this chapter over by me, you are not going to solve these illustrations again and again. So it's my request to all of you, please complete your, please write down by red pen all important points where you are getting stuck. Yes, I'm not getting this point. Just don't copy it. Okay, this screenshot leke just copy nahi karna hai. Every time you have to tell to yourself, yes, my concepts are clear and I'm going to write it properly. Okay, chalo koi baat nahi. So now it's time for admission. Admission के मैं कुछ आपको बेसिक्स बताता हूं, and then we are going to start. So first our yeah, 3 quiz. First is our quiz. Can you tell me formula for super profit method? Yes, first question, what is the formula for super profit? Yes, can you tell me what is the formula for super profit? How to calculate super profit beta? Can you tell me fast? Super profit. Yes, first quiz, 3 questions quiz beta, fast. Yes, first answer by Srinidhi Revankar from SRO. Very good beta. It's a actual profit minus normal profit. Second question. Very good beta. Very good. How to calculate normal profit? Can you tell me how to calculate normal profit? Yes, tell me fast. How to calculate normal profit? First winner is SRO. First winner is SRO. Normal profit. Gunshita answered second question. No. Sorry. Raghav Shah answered WRO. Normal profit is equal to capital employed into normal rate of return. Very good. Capital employed into normal rate of return. Many students answer Anushri, Sudhanshu, Rohit, Garlin, Swati, Devesh,
Very good, beta. Very good. And third question. What is the formula for capitalization method? Yes. Tell me, what is the formula for capitalization method for goodwill calculation? For goodwill calculation. Okay. So answer is by answer. Zeba beta, CRO. Formula is normal capital. Very good beta. Competitors capital first minus actual capital. Very good. Now you all are cleared with this concept. Very happy. This is by WRO member and this is by CRO member. So now there is a tie. But ठीक है, आज हम लोग next question नहीं खेलेंगे because I want to start today's session now. Beta, today we are going to see some entries regarding admission. तो आज मैं पहले तो admission का क्लियर कर देता हूं आपको पूरा एंड एडमिशन के बाद yes, now you only think important adjustments. You can write this important adjustments in case of admission. Yes beta, again I am asking you today same question. First rough works or directly PPT? Yes, first should I tell you all points in detail और डायरेक्टली पीपीटी? और पीपीटी आपकी रिवीजन रहेगी, जल्दी से मुझे बताओ. यस बेटा, प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं. भगत राजेश भाई, WRO CRO क्या है ये पूछ रहे बेटा. ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर्स है, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है. तो ये क्वेश्चन मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा था. तो भगत जी आप हो WRO के. ओके, स्टेप वाइज. ओके. इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स. डायरेक्टली पीपीटी नहीं चाहिए बहुत से बच्चों को. पीपीटी रिविजन्स. ओके बेटा, चलो. इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. नाउ यू ओनली टेल मी in 11-12 standard what is the first adjustment when there is a admission. Now you, yes, thinking process develop करना है हमें. थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं हम लोग. भले 15 मिनट लेट होगा तो भी चलेगा, बट वी नीड अ थिंकिंग प्रोसेस. यस, धोनी के वर्ड्स याद करने हैं कि प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट वी हैव टू डेवलप योर थिंकिंग प्रोसेस. चलिए, सो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. टेल मी फास्ट. First, what is the adjustment in case of admission? Now you are a paper setter, those who already solved this. चलो, very good. No बेटा, not goodwill. बेटा goodwill adjustment नहीं होगा. पहली adjustment होगी, yes, capital introduced by new partner. Amount brought by new partner, not only capital. I will tell you
why amount beta? Why amount? Amount introduced by new partner. Amount introduced by new partner. Why amount introduced? Because this amount is divided in capital account and goodwill amount. Goodwill share. Goodwill amount share. But a share is important. He will never bring goodwill amount. Total goodwill he never brought. Okay. He brings only capital account. And goodwill share. Share is important. Share. Total goodwill is something different. Okay. So, capital account will be retained in business. And goodwill is distributed among all partners. In which ratio, beta? In which ratio? Yes, fill in the blank. All partners in which ratio? Yes, yes, yes. In which ratio? Very good, beta. In sacrificing. Today you have to be very active. Huh? You have to be very active today. मेरा काम आज आपको एक्टिव करना है. आज मैं बात कम करेगा, आप लोग ज्यादा टाइप करोगे. ओके, मैक्सिमम टाइपिंग आज. सो फर्स्ट वन, अमाउंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर टूवर्ड्स कैपिटल and towards goodwill. Now for goodwill, this sacrificing ratio, we need to calculate. How to calculate this? Working note, old minus new. Old minus new is a sacrificing ratio calculation. And what is the entry? Entry here. Entry will be, now there are two entries. Cash to new partners capital. Which one? Capital amount and goodwill share. Total, total 90% problem में पूरा cash लेके आता है. Sometimes they will mention that goodwill is not brought, only capital part is brought. Okay, so it is given in the question. And what is the second entry? Second entry will be new partner capital account, goodwill share to all partners. See, so new partner का capital plus हुआ था because of cash brought, then goodwill share से उसका minus हुआ. So here he is remained with, he is only capital balance. So suppose he brought 30,000. Assume he brought 30,000 rupees. And goodwill share is 10,000. So now he will remain with only rupees 20,000. That is a capital balance. Goodwill share is recorded by, is taken by all partners in sacrificing ratio. So I want to tell you that कि यदि वो 30,000 रुपया लेके आता है, 30,000 में से भाई उसका कैपिटल का शेयर 20,000 है और गुडविल का शेयर 10,000 है. तो 10,000 उसका लाया उसने, पर उसका हक नहीं है उसके ऊपर. He has no authority to keep that 10,000 as his capital. That 10,000 will be distributed by all partners in sacrificing ratio. First point to your mind. Important point that you have to retain. That capital taken over by new partner is only 20,000 and that will be retained by business. 10,000 पे business का हक नहीं है.
Business will not return that 10,000 to new partner. That 10,000 is shared by all partners in sacrificing ratio. So goodwill adjustment is very, very important. Okay. Every time you do this एंट्रीज, एवरी प्रॉब्लम में कौन सी नई एंट्री आई ये आपको लिख के रखना है एवरी टाइम इन दिस पार्टनरशिप प्रॉब्लम. यू कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल एवरी टाइम. You have to understand what is a tricky adjustment in this question. Otherwise, remaining adjustments are there in partnerships, similar adjustment. Only one extra adjustment in every question, and that we have to identify. बाकी के क्वेश्चन में सेम है बेटा, सेम है. Second important adjustment. Understand, science background students. Second important adjustment is revaluation. In revaluation, there are two types of adjustment. Book values are changed. I hope you are writing this. And book values are not changed. Now, first thing I want to clear. What is book value which are getting changed? Understand this concept. Suppose Nikhil sir and Sanket sir are two partners. Nikhil sir contributed 1 lakh. Sanket sir contributed 1 lakh. Land is of rupees 2 lakhs. This happens in 2009. Now, land is having value of rupees 26 lakhs. Today's value in 2020. Land is having value of rupees 22 lakhs, 26 lakhs. Pritesh sir new partner, he contributed rupees 2 lakhs into the business. कितना contribute किया प्रीतेश सर ने? 2 lakhs rupees into the business. Now your balance sheet, because you are follower of historical cost concept, historical 2 lakhs. And here value is rupees. Sorry. So we will mention it at 2 lakhs only because we are follower of historical cost. Land 2 lakhs and cash 2 lakhs. Nikhil sir, Sanket sir, Pritesh sir. 1 lakh, 1 lakh, Pritesh sir 2 lakhs. Balance sheet tallies at 4 lakh at the time of admission. Now assume there is a fight between after 6 months. After 6 months, fight between Nikhil sir and Pritesh sir. Nikhil sir and Pritesh sir. Now what happened? Nikhil sir and Pritesh sir having fight, so they sold this land, they liquidated, the partnership getting dissolved. बंद हो गई partnership. तो लैंड बेचा 26 लाख में. तो नाउ यू हैव 26 लाख प्लस कैश ऑलरेडी यू हैव 2 lakhs. 2 लाख की लैंड 26 lakhs में हो गई. 2 lakhs rupees land, now it's valued rupees 26 lakhs. So now we retain with 28 lakhs. But wait, Nikhil sir, Sanket sir, Pritesh sir, this extra profit, 24 lakhs, who will share?
all three partners. All three partners. So now Nikhil sir's contribution is 9 lakhs. How? Because 8 lakhs profit and 1 lakh already he has. 9 lakhs. And Pritesh sir is having 10 lakhs. What happens, sir? Within 6 months, 2 lakhs Pritesh sir's capital is getting revalued and he is getting 10 lakhs rupees, sir, 10 lakhs. And Sanket sir और Nikhil sir तो देखते ही रह गए ये क्या हुआ. And this happened because Sanket sir and Nikhil sir has not revalued the amount at the time of admission of Pritesh sir. Suppose Pritesh sir के time पे ही revalue हुआ रहता. Revalue means land account debit to show it at original amount. No, it is at current amount. Revaluation model is telling you to show the asset at current value. Current value of land is 26 lakhs. So you have to revalue it 24 lakhs rupees extra. 26 लाख की आज की लैंड है और आपने शो किया था 2 लाख पे. ₹2 lakhs. 2 lakhs rupees. Land account debit to revaluation. Land account debit to revaluation. And this revaluation profit to Nikhil sir and Sanket sir 24 lakhs, 12 lakhs, 12 lakhs. Now, before admission, land is showing 26 lakhs. Nikhil sir's 12 lakhs plus 1 lakh already there. 1 lakh capital already tha. Plus 12 lakhs is added. 13 lakhs. Sanket sir, 13 lakhs. And Pritesh sir, he contributed 2 lakhs. Now suppose fight occurs between Nikhil sir and Pritesh sir. There was fight. So now they decided to liquidate, dissolve the firm. So 26 lakhs, you will get 26 lakhs, but Pritesh sir will get only 2 lakhs. And this is a power of revaluation. So if you don't revalue, Pritesh sir will get 10 lakhs rupees. And if you revalue, Pritesh sir won't claim any amount in the change in the asset value at the time of admission. So every time remember, every time you have to revalue your assets and liabilities and you have to change your value. Land account 26 lakh पे दिखेगा, revalued amount पे. So suppose if there is no revaluation, what happened? New partner will take benefit of this. He is getting the unnecessary revalued amount, 10 lakhs. He brought only 2 lakhs and within 6 months, he got 10 lakhs rupees. But see beta, suppose if there is a revaluation, then Pritesh sir cannot claim the amount excess than his 2 lakhs rupees. Now suppose when there is a fight, now 26 lakhs ka 27 lakhs value ho jata hai.
तो 1 लाख रुपए जो बढ़ गया उसके ऊपर प्रीतेश सर विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट. सो आफ्टर दैट सपोज इफ वैल्यू comes up by 26 to 27, 1 lakh से excess amount, that 1 lakh rupees Pritesh sir will get benefit. But remember, up to 26 lakhs, Pritesh sir won't get any benefit. So this is the revaluation account. You got the concept of revaluation? Tell me, whenever there is an admission or retirement or death, you will always revalue your assets and liability. And what is the revaluation rule? See, beta, our asset is increasing. Our assets are increasing and our liabilities are reducing. It's our gain. It's our gain. And what is the rule? Debit all expenses or losses, credit all incomes and profits, incomes and gains. So here, beta, revaluation account ko credit hoga. And whenever there is decrease in assets and increase in liability, it is your loss. And revaluation account is debited at that time. See, beta, assets increase, liability decrease, ये आपका फायदा है at the time of admission. And when to do this? Not any time. It's only when new partner enters or old partner retires or old partner का death हो गया तो. See, this is the goodwill adjustment. Revaluation adjustment. And revaluation profit or loss, who will bear? Old partners will get the benefit. Old partners in their old ratio. Old partner will get in old ratio. Here no sacrificing. Sacrificing is only for goodwill adjustment. Sacrificing is only for goodwill adjustment. When you want to change your assets and liabilities, books values are changed. Revaluation profit or loss, who will get it? Old partners. In which ratio? Old ratio. But sir, we don't want to change book values. Sir, we want to continue with 2 lakhs. We don't want to change book values. We don't want to change book values. So beta, here memorandum revaluation. Wait, I will tell you it in the question part. Just इतना याद रखो कि memorandum revaluation account is opened. And what is memorandum revaluation account? For that, wait for some time. In problem part, see, those students who want to solve administration problems, memorandum means it's like goodwill adjustment. This is divided in sacrificing ratio. Whatever profit you earned will be divided in sacrificing ratio. And if only revaluation account, old ratio. बस अभी इसके आगे मैं नहीं बताएगा. एक बार मैं हिंदी में पूरा समझा देता हूं. जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से, फटाफट समझ लीजिए. मैं स्पीड में बताऊंगा. देखो क्या हुआ है, पहले तो समझ लीजिए हुआ क्या. जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करो. देखो हुआ ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत यह है कि कल उठ के हमारे जब प्रीतेश सर, निखिल सर और संकेत सर, ये तीनों पार्टनर्स थे. संकेत सर और निखिल सर ने एक लैंड ली थी 2 लाख रुपए में, और वो लैंड ली थी 2 लाख की हो गई है. 10 साल बाद 26 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई. तो 2 लाख की एसेट की वैल्यू 26 लाख हो गई. तो ऊपर के जो 13 लाख रुपए ये उनको दोनों को मिलने चाहिए. उन्होंने तो 1 लाख लाया था. तो ऊपर का जो 12 लाख है, 13 लाख उनका कंट्रीब्यूशन अभी दिखना चाहिए. तो ऊपर का 12 जो है वो उनका प्रॉफिट है, और वो रिवैल्यूएशन नहीं किया तो प्रीतेश सर इसकी पूरी मलाई खा लेंगे. और प्रीतेश सर ने ये रिवैल्यूएशन नहीं करते थे तो आपने देखा था कि प्रीतेश सर 10 लाख रुपया लेके जाएंगे. और ये इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते. रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया तो नया पार्टनर अननेसेसरी जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी आज तक हुए हैं, और वो एसेट इतने साल तक रिटेन करके रखी थी, और वो एसेट रिटेन करने के बाद आपने
आपने तो रिवैल्यूएशन किया नहीं, और रिवैल्यूएशन ना करने की वजह से नया पार्टनर जो है वो उसकी मलाई खा लेगा। और इसीलिए रिवैल्यूएशन करना जरूरी है। जब भी नया पार्टनर आएगा या ओल्ड पार्टनर जो है वो रिटायर होगा या उसका डेथ होगा या किसी पार्टनर का, तो वो केस में हमें रिवैल्यूएशन करना जरूरी है। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। पर इसमें यदि आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज हो जाती है, लैंड की वैल्यू 2 लाख से जाएगी 26 लाख तक, और वो लैंड की वैल्यू यदि 2 लाख से 26 लाख तक जा रही है, और वो प्रॉफिट जो है वो आपको किसके साथ शेयर करना है, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर के साथ। पर सर यदि मुझे एसेट्स की लायबिलिटीज और एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो सर मैं क्या करूंगा? तो मुझे यहाँ पे एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आपको इतना याद रखना है कि ये गुडविल के एडजस्टमेंट जैसा प्रॉब्लम होता है। समझा तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करवा के दूंगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर सबसे जरूरी पार्ट ये था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये जब अभी हम लोग बनाते हैं, तो आपको प्रॉफिट और लॉसेस इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को होते हैं। नया पार्टनर ये मलाई नहीं खाएगा, नया पार्टनर ये मलाई नहीं खाएगा, इतना याद रखिए। ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो मुझे यस यू ओनली टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जस्ट यस वी हैव नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, बट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड यस बेटा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। टेल मी फास्ट।
हेलो 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 यस सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बीच में डिफरेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है. वेरी गुड. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपका जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. वेरी गुड. Important point is I just want to change my laptop. Today I'm going to give you break of only 8 minutes. तो 8 मिनट का ही ब्रेक होगा आपको. सो जल्दी से 12 बजे तक आप वापस आ जाइए और हम लोग आगे 1:30 तक कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके सो यस लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ ओनली 8 मिनट्स. जल्दी से ब्रेक ले लीजिए 8 मिनट का.
We will quickly revise whatever the concepts. Change in accounting constitution means what? Accounting book values are changed and book values are not changed. Book values are changed, revaluation account, memorandum revaluation account. In case of book values are not changed. If you want to take screenshot, you can take it. Yes बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलो जल्दी खत्म कीजिए आज का, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन. ओके, accounting debit loss revaluation account debit to asset or revaluation account debit to liabilities if liabilities are increasing, assets to revaluation if there is a profit, or liabilities to revaluation. Remember, revaluation balance is transferred to old partners in their old ratio. Old ratio में transfer करना पड़ता है. Memorandum revaluation account, find out the sacrificing ratio and then entry will be distribution of the profit. Share divide करना है. New partner share is divided. It's like goodwill adjustment, similar to goodwill adjustment. Similar to goodwill adjustment. Remember. Take screenshot फटाफट बेटा. ये लिखना है आपको बाद में. In theory book, in theory you have to write out all these points. Yes बेटा. हर्षदीप बराबर 6. Yes बेटा. Yes बेटा. Very good. रिवैल्यूएशन इज अ टेम्पररी अकाउंट बेटा. केशव ठाकुर, रिवैल्यूएशन नॉमिनल बोल सकते हो, पर रिवैल्यूएशन ये टेम्पररी अकाउंट है. वो तुरंत बंद भी हो जाता है, ओपन होता नहीं. एसेट्स लायबिलिटीज रिवैल्यू हुए, टेम्पररी अकाउंट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट. डिवाइडेड. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन. सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग लूजिंग रेशियो. ठीक है. सो ये थी कुछ थ्योरी रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. आई होप you will solve 5 to 6 illustrations of admission, at least 6-7 illustrations of admission. आप कल तक solve करोगे. Today we are going to see some now illustration parts. तो जल्दी से आ जाइए goodwill adjustment के questions में. चलो. Yes, now it's time for okay, first, yes, now your questions in goodwill adjustments beta. Now it's time for problems. Now ओके बेटा, बीच में प्रॉब्लम हुआ था. मेरा लैपटॉप जो है ना आज, उसका चार्जर रह गया था, तो उसी के बारे में आज भागम भाग चल रही थी. फिर भी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैंने आप आज को दूसरे लैपटॉप पे आपको लिख के बताया. नाउ आई विल बी देयर. चलिए ठीक है. यस, नाउ क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. आई थिंक वन क्वेश्चन ऑफ टीवाई के, one important question is there. TYK में एक क्वेश्चन है. Yes, that we are going to see. Yes, first unit 1 practical questions. 1 beta, one question we are going to solve properly. Exam speed से. First I will explain this question and some illustrations I'm going to take it in writing. So practice is very important. Practice के बिना कुछ नहीं होगा. So TYK का first question, page number
8.25. This is unit 1. Huh? This is unit 1. Weak, able, and lazy are partners in the ratio of 2:1:1. It was agreed that interest on capital immediately capital account को debit होएगा 10% per annum, and interest on drawing is 8% per annum. Now, what is important in this question? The following are the particulars of capital and drawings accounts. Capital account, you can see here it is a credit plus, but lazy has debit plus and drawings is debit balance. The draft account shows that their net profit is 60,000 before interest on capital and drawings, subject to rectification of errors. Life insurance premium of week rupees 750 paid by the firm has been charged to miscellaneous expenditure. Now here, you have to understand rectification entry. What is correct entry? LIC, life insurance, is a personal expenses. It's a personal expenses. But you treat it as miscellaneous expenditure. So capital account debit to cash is a correct entry. Wrong entry, miscellaneous expenditure account debit to cash. Don't write anything. Understand it quickly. Rectification entry, cash correct. So capital account is debited, same balance, and miscellaneous expenses is credited, but miscellaneous expenses is a nominal account, therefore to P&L adjustment account. So to P&L adjustment account, and your profit will get increased due to this. So मेरा profit 60,000 था, उसमें add हो जाएगा 750. So my profit is 60,750. Correct है? And my current account of week is debited by 750. So two effects: profit increased and current account balance decrease. Current account balance decrease. So you can pass entry here: current account debit to P&L adjustment. Write it down, beta. Repairs of machinery 10,000 debited to plant account. So correct entry is repairs account debit to cash. Wrong entry is plant account debit to cash. Amount is 10,000. And second entry, depreciation account debit 2,000 to plant account 2,000. Cash correct. Plant balance 8,000 and depreciation balance 2,000 in wrong entry. Repairs will be debited, but instead of repairs, P&L adjustment is debited 10,000. Reverse this to plant 8,000. Reverse this depreciation means to P&L adjustment 2,000. Instead of this, we will pass only one entry: P&L adjustment debit 8,000 to plant 8,000. So our profit is getting reduced. 60,750 was the profit. Now 8,000 is reduced.
So my profit is 52,750. Traveling expenses of able for a pleasure on 30th June is debited to traveling expense account. So better rectification entry. It's similar to this. So instead of capital, now here traveling expense. So entry will be capital account debit or current account debit to P&L adjustment. Profit will get increase. 52,750 plus 3,000, 55,750, and current account balance of able is reduced by 3,000. So my new P&L balance is 55,750. I will show you the answer part. Chalo. So what is new in this? Question is based on rectification entries. Pass through P&L adjustment, asked to prepare P&L appropriation and partners capital account. You can take a screenshot of this. Wait. So this is your index, A plus category question. TYK1. Take a screenshot, write it afterwards. Current account. Credit plus, debit minus. And now I will show you the answer part. Adjusted net profit, I already calculated 55,750. So now your new profit will be 55,750. Now interest on drawings is very, very important adjustment. Balance in drawings. And interest is charged only for 6 months. You can check 10,000 minus 750 plus 15,000. So balance in drawings, you can see. So you can, okay. Instead of deducting 750, you will add it in drawings. Better drawings में add करना and 10,000 में 3,000 add करना. Instead of deducting it from current account, you will add it in drawings. You will add it in drawings. Drawings में add करो instead of current account. राघव शाह जी, प्लीज आप बहुत बार एक ही मैसेज मत टाइप कीजिए. Current account 5,000 and interest is important. And then P&L appropriation. P&L appropriation, you will divide it. In P&L appropriation, interest on capital will be there and balance interest on drawing is there. So this is P&L appropriation.
Now I do not have time to explain you. Write down all these things. So beta फटाफट screenshot ले लीजिए. So first you will prepare P&L appropriation. चलो एक काम करता हूं, हम लोग टिक-टिकी लगा के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. Yes, so drawings में क्यों ऐड होगा? Because it has a debit balance and it is for their personal amounts. So personal amount इसलिए drawings में ऐड होगा. Do one thing. I will solve this illustration only for you. Yes, how to solve it in the exam. Working note 1. Yes, टिक-टिकी जी टेक्निक यूज करेंगे. You can write with me if you want. Otherwise, you can see. P&L adjustment. Particulars rupees. Particulars rupees. One, दो नहीं. By net profit. How much net profit beta? 60,000. You can add 1 minute in this. By miscellaneous expenditure. By miscellaneous expenditure. By miscellaneous expenditure. 750 for first adjustment. To plant and machinery. To plant and machinery. To plant and machinery beta. 8,000. And by drawings. 3,000. So to net profit. Yes, beta. What is the net profit? 55,750. 63,750. This is working note 1. Working note 2. Interest on drawings. Particulars. Weak, able, lazy. Weak, able, lazy. Yes, beta. Roman 1. Balance in drawings. So what are the balance in drawings, beta? See, 15,000, 10,000, 10,000. Please have patience. This is not our regular class के आपके साथ मैं लिख सकता हूं. आपको थोड़ा समझ के खुद से लिखना पड़ेगा. Balance in drawings. Second one, rectification. Week में 750 we will add and 3,000. Rectified balance 15,750, 13,000, 10,000 and Roman 4 रेड पेन से
interest at the rate of 8% per annum for 6 months. So multiply by 4%. 630, 520, 400. Now, main answer. What is asked? P&L appropriation and current account. P&L appropriation account. Particulars rupees. Particulars rupees. How many of you are getting this answer? Yes, beta. Tell me it in the comment section. कि सर मुझे समझ में आ रहा है. I want to see. ये स्पीड आप लोग मैच कर पा रहे हो क्या नहीं? Because this is exam required speed, beta. By adjusted net profit. Working note 1. 55,750. 2. Interest on capital. Yes, beta. In a partnership, we do not have option. So working note पहले बना दिया तो भी चलेगा. Interest on capital. Weak. Able. And after one line, lazy. Weak beta 75,000. Into कितना परसेंट है? 10%. 7,500 inner column. 40,000 into 10%. And last one is 30,000 into 10%. 4,000. 14,500. Correct है? And by interest on drawings, weak, able, lazy, already we calculated 630, 520, 400, 630 और ये 1030 प्लस 520, 1550, 1550. Sometimes you have to do it without calci beta. And 2 net profit transferred to current account. It's a balancing figure. Weak, able, lazy. What is the profit sharing ratio? 2:1:1. So 2/4, 1/4, 1/4. $55,750 plus 1550, 57,300. Minus 14,500, 42,800. Divided by 4 into 2, 21,400, 10,700, 10,700. If you are matching my speed beta, you are genius. And last account is current account. Current account. Particulars. Weak, able, lazy. Particulars. Weak, able, lazy. आफ्टर ड्राइंग बेटा 1 मिनट का ड्राइंग हो जाएगा आपका, तो आपका ये फॉर्मेट दिखने लगेगा.
यस, जितना ड्राइंग को टाइम गया आपके। ओके, सो नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच बेटा? 10,000, 5,000, and two balance brought down. For lazy, it's a 5,000. You can check current account. Then we will write drawings. Two drawings after rectification. It is 15,750. Working note 2. 13,000. 10,000. To interest on drawings. 630. 520. 400. By interest on capital. Already calculated beta, interest on capital 7,000, 500, 4,000, 3,000, and by P&L appropriation 21,400, 10,700, 10,700, and last but not least, it's a two balance carried down and by balance carried down for lazy. So 10 plus 7.5, 7.5 plus 21.4, it's a 38,900 minus 15.75 minus 0.63. I'm getting answer 22,520. 5 plus 4 9 over 10 19,700 here without calc भी हो सकता है 19.7 minus 13 minus 0.52, it is 6180, and here it is 15,400. So 15.4 minus 3 minus 10.7, so this is 1,700. Yes, this is done beta. 11 minutes, 11 minutes, 12 minutes में किया solve. 12 minutes maximum time you take in exam beta. How much time? Maximum time in exam beta 10 to 15 minutes. I know first time if you are solving it will be difficult बेटा, जब पहली बार होता है तो difficult लगेगा ही. Yes, मशीनरी का कुछ नहीं करेंगे बेटा. Yes, any doubt till now? Yes, are you finding it easy? Those who tried it, जिन्होंने ट्राई किया उनको इजी लगा बेटा? चलो बताओ, ये स्पीड से सॉल्व करो बेटा आज घर पे. आप 2-3 बार कर लोगे ना ये क्वेश्चंस, 2 से 3 बार. What is new? And now you have to understand what is new in this question. कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नया था. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर आ गया हमें. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद और क्या क्या नया था हमें? यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. आफ्टर दैट P&L एडजस्टमेंट. ऐसा रट जाना चाहिए, रट्टा लग जाना चाहिए कि P&L एडजस्टमेंट हमने चेंज किया 60,000 का 55,750. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वर्किंग नोट 2 निकाली. देन करंट अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट का हमने बैलेंस निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन के लिए. एंड आफ्टर दैट P&L एप्रोप्रिएशन वी प्रिपेयर्ड. P&L एप्रोप्रिएशन में बाय ऐसा दिखना चाहिए, बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 2 P&L, and then current account by balance brought down by interest on capital, by P&L appropriation to drawings account, to interest on drawings, and then to balance carried down. बस खत्म. This is how you should revise your questions. Sir, इतना कैसे जल्दी आएगा? Practice, practice, practice. Okay. Practice के बिना नहीं होएगा. Okay.
सर इजी 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 सर, डन इन 12 मिनट्स, वेरी गुड बेटा चित्रांग। सब पार्टनरशिप है ना, इंडिया के 80% स्टूडेंट्स दे कीप दिस चैप्टर इन ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज मॉडल क्वेश्चन दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, and basic thing, if you go line by line, you won't face a problem while solving these questions. But before my session, I requested you all, please read it once, try to solve it. Okay? Yes बेटा, LIC is a life insurance, रोहिणी जाना, तो वो आपका बेटा यही है, हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 घंटा है हमारे पास, डोंट वरी गाइस। 10-15 मिनट में बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हो गए ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं हूं ना आपके साथ, तो डोंट वरी, हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेंगे। ओके, पीबू पांडे इज सेइंग सर इजी है, बट आपका स्पीड थोड़ा ज्यादा है, वी कांट मैच। बेटा हो जाएगा, डोंट वरी, बाय डूइंग प्रैक्टिस यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। अंजना इज सेइंग सर पार्टनरशिप यू मेड इजी फॉर मी। अरे बेटा अकाउंटिंग इज इजी, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, अकाउंट्स ये ऐसा सब्जेक्ट है इन विच यू कैन स्कोर मोर देन 90 इफ यूर बेसिक्स ओनली 3 रूल्स रे, 3 रूल्स। एंड देख मैं कैसे याद करता, देख माय रिवीजन टाइम, अभी देख मैं ये क्वेश्चन कैसे रिवाइज करूंगा, मैं ऐसा पूरा सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, आई वोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट आई विल टेल टू माई सेल्फ हियर व्हाट आई हैव टू राइट बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, then I will decide why my profit is getting increased because of interest on drawings. Then मैं बोलेगा why my profit is getting reduced because of to interest on capital. There is no salary, there is no remuneration, there is no rent, something कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. And balancing figure is net profit transferred to partners in cap profit sharing ratio. Then what is current account? Beta, I will revise in this way. Current account. Credit plus debit minus. Buy balance brought down. Now one partner has advance. Lazy to balance brought down. His capital is increased due to interest on capital. He will get it. His capital is increased due to profit. P&L appropriation. Drawings के वजह से कम होएगा and to interest on drawings. And then balancing figure is to balance carried down. This is a revision purpose. If you recall in this way, you will never find these questions difficult. Sir, 2 hours बोलते रहना is not a joke. Okay, और आपके दिमाग में हर कॉन्सेप्ट डालना, it's very difficult to fit all concepts in 7 days. It's challenge for me. Okay, और वो भी आपको entertain करते हुए. One way communication, it's very easy. But beta, when to explain these difficult topics? Yes, ऐसे मैं एक ऑब्जर्व किया कि जब भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना वो आ ही जाते हैं, और आई एम टेकिंग इट एज अ चैलेंज। तो मैं हमेशा ऐसा, हमारे सीमा मैम या प्रिया मैम को मैं कभी नाराज नहीं करता हूँ, सर अपने को एक लेवल आगे लेके जाना है, माई ड्रीम इज डिफरेंट, कि ऐसे क्लासेस को एक अलग लेवल पे लेके जाना है। आई वॉन्ट रिजल्ट, आई वो जस्ट डोंट वॉन्ट कि सिर्फ सिखाया, वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। यस, एंड यू गाइज आर हेल्पिंग मी अलॉट, बहुत बढ़िया। यस, yes beta, IOC interest on capital will be transferred to current account beta. Chalo, after that Bhavna Patel, yes, we are going to take that guaranteed profit. Illustration number 2. Thank you, Barakatullah. Sir, you are awesome. Logical thinking is a key of entry. Yes, beta. Very good, Avinash. Priyanka Jha, sir, just because of your teaching style, I like ICA classes. Thank you, beta. Priyanka. Chalo.
बेटा मानवी डेप्रिसिएशन की एंट्री देख, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपने कवर किया है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी आपने 10,000 में लिया, सो प्लांट एंड मशीनरी टू कैश 8,000, 10,000, 10,000 एंड देन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का डेप्रिसिएशन होगा? 2,000। पर डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट ऑलरेडी किधर जा चुका है? P&L एडजस्टमेंट में। सो P&L एडजस्टमेंट में 2,000 जा चुका है एंड प्लांट एंड मशीनरी को रिवर्स 8,000 से करना पड़ेगा। सो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस 8,000 होगा और डेप्रिसिएशन में 2,000 बैलेंस होगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री में बेटा रिपेयर्स को डेबिट देगी। देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करेगी तू? रिपेयर्स को डेबिट देगी 10,000 से टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000 बिकॉज यू वांट टू रिवर्स इट एंड टू डेप्रिसिएशन 2,000। अभी ये रिपेयर्स इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, तो इनका बैलेंस किधर जाएगा? P&L एडजस्टमेंट और 10,000 डेबिट 2,000 क्रेडिट, तो P&L एडजस्टमेंट कितना होएगा? 8,000। सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000, 8,000 ये फाइनल एंट्री होगी। P&L एडजस्टमेंट डेबिट मींस यूर लॉस, लॉस हुआ 8,000 का रेक्टिफिकेशन एंट्री में, डेबिट मींस लॉस। Yes, beta. Whenever there is no mention of drawings, then beta, yes. रुको सबर करो बेटा बरकतुल्ला। यस, चलो राम रहीम का एक क्वेश्चन कर लेते। Ram Rahim are in partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. As Ram of account his advancing years feels he cannot work as hard as before. Okay, so Ram wants to retire. And Ratan is admitted as a partner with effect from 1st January 2019. Okay, wait. Becomes entitled to 1/10 of the net profit and nothing else. So he wants 1/10 of profit. Mutual ratio between Ram and Rahim remaining unaltered. So Ram and Rahim में 3:2 ये ratio unaltered होगा. Before becoming a partner, Ratan was getting a 500 per month salary together with commission of 4% on net profit after deducting his salary and commission. Beta net profit after deducting his salary and commission 4%. 4% ये after deducting salary and commission. So this is a new adjustment. So 4/104 after deducting होगा. So already taught by other faculty beta in final accounts. So if it is a commission on आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे कमीशन रहेगा प्रॉफिट के ऊपर, तो इट इज 4/104 एंड बिफोर चार्जिंग इज कमीशन तो इट इज 4/100. तो बेटा आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू लॉजिक फॉर दिस बिकॉज ऑलरेडी टॉट बाय फाइनल अकाउंट्स इन अदर बाय अदर फैकल्टी, तो डोंट वरी. It is provided in the partnership deed that Ratan's profit as a partner in excess of amount to which he had been entitled if he had continued as a chief clerk should be taken out of Ram's share of profit. So minimum amount that he should get beta salary plus commission, that is the amount that he should get, and this amount is a guaranteed. Okay, so guaranteed profit उसका निकालना पड़ेगा. ठीक है? And who will give this? Ram will give this. चलो तो अभी how to solve this question? Very easy. What is the share of profit? 1,10,000 is a net profit. ठीक है, देखो कैसे solve करना है. Very simple. Very simple. First you will calculate. Amount due to Ratan. Amount due to Ratan. Amount due to Ratan. Serial number, particulars, computation, rupees. Serial number, particulars, computation, rupees. Serial number, particulars, computation, rupees. See. Number 1. Salary. How much salary he is getting, beta? Salary. He is getting salary of rupees 600 per 500 per month into 12 months. Correct, beta? 6,000. 2. Commission.
Commission beta very important. It is 4/104 into 1,10,000 is a net profit. But wait, after getting salary deduct karna bhulna mat. So 6,000 you have to deduct. This 6,000 you have to deduct. So salary 6,000. So 110 minus 6 into 4/104. So what is the amount? 4,000. Roman 3. Total 1 plus 2. How much amount is going to get? Receive 10,000. Roman 4 less share in profit as partner. 1,10,000 into 1/10. So he must get 11,000. How much he should get? 11,000. So beta, excess amount, excess chargeable to, now who will pay this? Ram will pay this. Roman 3 minus Roman 4. Ram will pay 1,000. By profit. Now P&L appropriation by profit. 1,10,000. To profit transferred, Ram 1,10,000 minus salary 10,000, salary and commission into 3/5. 1,10,000 में से 10,000 जाएगा ना. This is a profit. Previously, this profit, who will own this profit, beta? Ram and Rahim. But Ram is extra 1,000. Ram is charging. Ram is paying extra 1,000. So this 1,000, see, Rahim का क्या होगा? 1,10,000 is a profit. Wait, but 10,000 you have to pay to Ratan. But he won't take this 1,000. So directly 1 lakh ka 2/5. And Ratan will get 11,000, 1/10. So now 100 into 3/5 minus 1. So Ram is getting 59,000. This 1,000 you have to deduct it separately. And Rahim is getting 40,000. You can see your tally or not. 1,10,000 से tally होना चाहिए. 1,10,000 में से 10,000 नॉर्मली सपोज रतन को हमने एडमिट नहीं किया रहता तो 10,000 एनीवे यू हैव टू पे. If Ratan is not admitted, 10,000. So Rahim is ready to take 10,000. But extra 1,000 who is taking? Who is charging extra 1,000? Ram is paying that extra 1,000. So Ram कैसे कम होगा and Ratan में add हो जाएगा. Rahim is not going to explain. Take this. Why we took 4/10, beta Srinidhi? 4/104 is only because the salary he is getting after charging his commission. Final accounts में आपने किया है ये adjustment. So I'm not going to explain this. After charging होगा तो 4/104 and before charging होगा तो 4/100. So please, another faculty already taught you this before charging and after charging. So इतना ही याद रखो. After charging होगा तो 4/104. 4/100 plus rate of commission, that is 4%. It is a rate of commission. It is a rate of commission. After charging होगा तो 4/104. Before charging होगा तो 4/100. Any other question? No. Last one. TYK3, who can solve this? Those who have ability to understand. Yes, बेटा हमारा तो 5 मिनट में ही हो गया ये क्वेश्चन. टिकटिकी जी थोड़ी देर के लिए चले जाइए. गुडविल में वापस आ जाना. यस. बेटा ऑलरेडी अनदर फैकल्टी टॉट यू. यस.
प्लीज ट्राई टू अटेंड इट इन द लाइव सेशन। अब मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सबको, रिकॉर्डेड में देखना, आपको ये आंसर देना ये बहुत डिफिकल्ट जाता है। सो ट्राई टू गिव आंसर्स इन लाइव सेशन, एटलीस्ट ट्राई टू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट। ओनली one adjustment important. What is new in this concept now in illustration number 2? So what is new? See, immediately I prepared index for you. Yes, इंडेक्स तुरंत आपके लिए आ जाएगा। ये देखो इंडेक्स, इलू 2 का इंडेक्स क्या है, टीवाई के 2 का। इंडेक्स पे भरोसा रखो। सी, गारंटी गिवन बाय पार्टनर राम टू रतन। तो दिस इज अ रिविजन। रतन प्रीवियस अर्निंग सैलरी प्लस कमीशन एंड ही इज गेटिंग कमीशन। कमीशन कैसे मिला, प्रॉफिट माइनस सैलरी इंटू 1/404। सो दिस इज अ यस, हु विल पे डिफरेंस बाय राम एंड नाउ ही इज गेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट में दो पार्ट्स में, रतन प्रीवियस अर्निंग प्लस राम गारंटी। बैलेंसिंग फिगर 1 लाख, 3/5 and 2/5, and that is by Rahim guarantee 1000 rupiah. So this is a quick revision. This is a quick revision. A plus category question. Now it's easy, beta. Now it's easy. Yes, tell me it in comment. Yes. Yes, beta. एकता, डोंट वरी। आज पार्टनरशिप का कौन सा दिन है, कैन यू टेल मी? वी स्टार्टेड ऑन फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे। ओके, सो वी हैव 2 more days. Now 2 days we are going to solve only admission and goodwill problems. Tomorrow no retirement concepts. Tomorrow only admission and goodwill questions. Yes, goodwill पूरा solve करना कल, एंड एडमिशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करना, एडमिशन के क्वेश्चंस भी। ओके, प्रॉमिस मी यू आर गोइंग टू राइट ऑल दीज थिंग्स टुडे। यस, टीवाई के 1 2 3 इंडेक्स भी कॉपी कर लो बेटा। चलो अच्छे से कॉपी कर लो, इंडेक्स को कॉपी कर लो फास्ट। चलो इंडेक्स लिख लो। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, rectification entries now you understood. ड्यू एंट्री आईसीआई क्या पास करती है, एक्सपेंडिचर टू पार्टनर्स कैपिटल एंड देन P&L अप्रोप्रिएशन टू एक्सपेंडिचर। बट मैं आईसीआई एक ही एंट्री पास करती है, मैं 2 एंट्री पास करता हूं। दिस इज 1 2 3 इंडेक्स, 4 5 6 का इंडेक्स। इफेक्टिव कैपिटल यू अंडरस्टूड। Then 5th number, 6 7 is very easy, current account and capital account concept, C category। 8 number minimum guarantee, 5 number हो गया, बाकी तो कुछ दम नहीं है। यूनिट नंबर 1 इज वेरी इजी। यूनिट नंबर 1 कोई भी ऑप्शन में नहीं रखेगा। लास्ट क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग गुडविल एडजस्टमेंट्स, लास्ट क्वेश्चन। बेटा पेशेंस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। दोज हु आर गिविंग अप, यस बेटा समझ लो, आप लोग आंसर्स नहीं दोगे तो यू आर फाइंडिंग इट्स डिफिकल्ट, ठीक है, पर गिव अप नहीं करना है। बिकॉज मैं भी था पार्टनर्स कैपिटल, मुझे भी थोड़ा टफ लगता था व्हेन आई वाज एट इन फाउंडेशन। मैच्योरिटी लेवल जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तो इंसान तेज होता जाएगा। नाउ सेकंड स्टैंडर्ड को दक्ष का जो प्रॉब्लम्स है 2+3 या मल्टीप्लीकेशन, यू विल फाइंड इट्स वेरी इजी बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, बट फॉर देम इट्स डिफिकल्ट। सिमिलरली फॉर मी फाउंडेशन इज वेरी इजी, बट फॉर यू इट इज डिफिकल्ट। बट बेटा डोंट गिव अप, ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू गेट द फॉर्मेट। मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता हूं, पर यह बहुत जरूरी चीज है कि एक जगह पे 1 घंटा नहीं 10 घंटे घिसना पड़ेगा, 10 आवर्स एक जगह पे बैठना पड़ेगा, देन सीए होने वाला है। मामूली नहीं है। आधे लोग गिव अप करते और फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज बेस्ट अटेम्प्ट। आई एम टेलिंग यू दी प्यूरिटी, ये जो है ना एक सबसे बड़ा सच ऑफ सीए कोर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट इज बेस्ट अटेम्प्ट। रिमेंबर, फिर कुछ फायदा नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा
पर जो तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ोगे ना, वही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। और संकेत सर का सुनिए बस, बाकी कुछ भी मत खींचे। ओके। X and Y partners, as per terms of agreement, interest is allowed on capital at 8% per annum. कितना इंटरेस्ट है? 8% per annum. And charge on drawings is 10%. X withdrew 40,000 per month at the end of each month, and Y withdrew 1,20,000 at the end of each quarter or 40,000 at the end. Okay, so interest on drawings हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी X का, चलो X का कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यू ओनली टेल मी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, ड्राइंग्स जो है, मैं पहले तो ड्राइंग्स लेस कर लेता हूं। ड्राइंग्स डेबिट में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आएगा, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन इधर आएगा। अभी मुझे फॉर्मेट पता है ना पूरा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में इधर लिखेगा बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट, देन आई विल राइट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। एंड एक्चुअली इधर एक गलती हो गया है, सैलरी को डैश देना है शायद से, सैलरी को डैश देना है, इट्स क्वेश्चन मार्क आ गया, इट्स अ डैश। यार ये चेंज करवाना रहेगा यार मेरे से। ओके, सैलरी को डैश देना है आपको, सैलरी को डैश देना है। यस, आज प्रिया मैम से बात कर लूंगा। सैलरी अकाउंट को डैश देना है, मैं गलती से वो रह गया, क्वेश्चन मार्क आया है वहां पे। एंड लास्ट में बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, सो दिस इज योर प्रोफॉर्मा। सो पी एंड एल कैपिटल अकाउंट, एटलीस्ट यू आर अवेयर अबाउट दिस, ओके। सो ड्राइंग्स कितना है? 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सो 40,000 इंटू 12, 4,80,000 ड्राइंग्स, 4,80,000 and 1,20,000 at the end of each quarter. Each quarter means 4 quarters are there. So 1,20,000 into 4 quarters. So 40,000 into 12 months, 1,20,000 into 4 quarters. Easy. 40,000 into 12 months and 1,20,000 into 4 quarters. Very, very easy. अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यस, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सो ए के लिए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, $40,000 into 12 months, सॉरी, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ड्राइंग्स का रेट है 10% एंड एंड है तो 5.5। शॉर्टकट ऑलरेडी आई टॉट यू, so you will get 22,000 interest on drawings। and y का, y b का 30 जून, डेट नहीं क्या वो, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, कितना निकाला? 1,20,000 at the end of each quarter, so up to 31 March, 9 months, 6 months, 3 months, 0, product 12 9s are 10,80,000, 108, 12 6s are 7,20,000, 3,60,000, 0, 1080 plus 720 plus 360, 21,60,000 is the answer, and 21,60,000 into effective interest is 10% divided by 12, because product है, effective drawings is 180 into 10%, it is 18,000. So I'm getting the answer 18,000. Total is 40,000. Sorry, interest on drawings 22,000, 18,000, 40,000 to salary. He is getting 3,60,000.
160, 288 minus 160, 128. So interest on capital is 1,60,000 and 128. 1/3 is 280. So 2/3 kitna? Double na? So 2,80,000 into 3 divided by 2. So he's getting 5,60,000. Why I'm calculating this? 1 share 280. So 2 share 560. Double na? So 560 plus 280. You are getting 8,40,000. So here I will write 5,60,000 and 2,80,000. Balancing figure is P&L appropriation ka 840. 840 plus 288 plus 360 minus 40. So you are getting 14,48,000. This is the balancing figure. From interest on capital 160, 1,60,000 is how percentage is? Percentage, it is 8%. So when you invest 100 rupees, you are getting 8 rupees interest on capital. Now you are getting interest on capital 160 and 128. 1,60,000 and 1,28,000. So how much? So 160 into 100 upon 8. So this is 20 lakhs. So this is the opening balance because they are getting interest on capital. So interest on capital se ye milega. And 1,28,000 divided by 8%, 16 lakhs. And balancing figure will be 2 balance carried down. This is very simple question. Once you got the concept clarity, or I will show you the answer, how to think. Last question था ये unit 1 का. How to think, you can take a screenshot. Yes. How you thought? Drawings nikala. Yes, you can take a screenshot thinking का. ABC. पहले ड्राइंग्स निकाला, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाला 1,20,000 ऑफ Y नंबर C पे, फिर ये ABC हुआ, फिर D से अपने प्रॉफिट पे से X का शेयर निकाला, फिर टोटल प्रॉफिट निकाला, फिर सैलरी लिया था X का, P&L बिफोर एप्रोप्रिएशन निकाला. सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल निकालना था. Capital nikalna is very, very important. 1,60,000 divided by 8%, and then closing balance of capital. That is a balance carried down last में. So A to I steps मैंने दिए हैं. A to I steps दिए हैं. A to I steps दिए हैं. 5.5 से मल्टीप्लाई करते बेटा. 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं. प्लीज पार्टनरशिप का बेसिक पोस्टिंग तो भी करके आओ. यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस. भले आपने 100% नहीं सॉल्व किया, इट्स ओके, बट पार्टनरशिप बेसिक्स तो भी करके आओ. एटलीस्ट बेसिक्स. ओके सर. सो वी फिनिश्ड फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट यूनिट हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया. Now we are moving to unit number 2 because we have only 2 days to complete partnership and परसों admission भी है. So 4 days, a third day, 5 days till admission. चलो, now let's start with goodwill adjustments. चलो फटाफट goodwill adjustments. Illustration number 1. In one question, we are going to solve all these adjustments. So those who are doing it for the first time,
Yes. Now it's very easy, beta. Please understand. Goodwill, already you studied, beta. Goodwill adjustment. Let's quickly revise it. Goodwill is divided in two parts. Number of years of purchase given, not given. बराबर है? Given में कितने methods होंगे? Average profit, super profit, and annuity method. And in case of not given, it is a capitalization method. Normal profit, you will take your average of last 4-5 years and you will calculate it. Super profit, difference between your profit and your competitor's profit. Annuity is the present value of super profit. Capitalization method, normal capital, that is your competitor's capital, and minus actual capital, but both में profits will be same. So बेटा very very easy. तो चलो यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यूनिट नंबर 1 हो चुका है. यूनिट नंबर 2. Okay. Lee and Lawson are equal in partnership. They agreed to take Hick as 1/4 partner. So Hick कितना partner है? चलो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए. 1/4 partner. So Lee and Lawson are in equal partnership. Equal partnership 1:1. Hick को लिया नया partner 1/4 partner. They decided to find out the value of goodwill. Capital employed by them is 5 lakhs and normal rate of return is 20%. So beta first method is average profit method. Average profit में you can see there is increasing trend. Increasing trend. Your profits are increasing. And whenever your profits are increasing, use weighted average method. कौन से मेथड को यूज कीजिए? Weighted average method. Now what is the difference between weighted average method and simple average? See, 100, 110, 120. Simple average is 110. But weighted average will give you better answer. See, weighted average, weights 1, 2, 3. Weights are always in increasing side. Product 100, 220, 360. Total weights का 6, 100 plus 220 plus 360, 680. So weighted average answer will be 680 upon 6, 680 upon 6, 113.33. So answer is better than simple average. Simple average answer is 110. Weighted average answer is always more weight, more answer. 120 के towards झुकेगा. 120 के towards झुकेगा. That is weighted average method. More weight, more answer. So in close year, means if you are in 2022, तो आपका जो weighted average profit है 2021 के हिसाब से ज्यादा profit देगा आपको. Then you use weighted average method. Weighted, नाम weighted क्यों है? Logic is very simple. Weight more, profit more. Weight less, profit less. So 100 के towards answer नहीं झुकेगा, 120 के towards answer झुकेगा. Okay. Now here, weighted average method 1, 2, 3, 4. You can take on calci. Directly on calci, I will teach you. 120 into 1 memory plus. 125 into 2 memory plus. 130 into 3 memory plus. 150 into 4 memory plus. Memory recall 1360. Memory recall कितना आया? 1360. You can do by your own. 1,13,60,000. चलो एक बार वापस. And total weights 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10. So divide by 10. So my weighted average profit is 1,36,000. Okay, 1,36,000. And simple average कितना आया रहता? 120 plus 125 plus 130 plus 150 divided by 4. Simple average 131,250. But we will consider as there is increasing trend. ट्रेंड ये चढ़ता हुआ है. सो जब भी ऐसा ट्रेंड रहेगा ऊपर के साइड तो आपको वेटेड एवरेज मेथड यूज करनी है. कौन सी मेथड यूज करनी है? तो वेटेड एवरेज मेथड आपको यूज करनी है. दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. 120 प्लस 125 प्लस 130 प्लस 150 डिवाइड बाय 4 किया तो सिंपल एवरेज. एंड वेट से किया तो वापस से एक बार 120 इंटू 1, लास्ट के 3 जीरो छोड़ दो, मेमोरी प्लस. 125 इंटू 2 मेमोरी प्लस. 130 इंटू 3 मेमोरी प्लस.
and 150 into 4 memory plus memory recall, and you will divide it by 10. You will get the answer 136. So 1,36,000 is my weighted average profit multiplied by number of years of purchase. In this question, number of years of purchase you have to assume it is 3 years. Sir, assumption कैसे लेंगे? ठीक है, अभी नहीं दिया है तो assumption लेना पड़ेगा. So ICI ने नहीं दिया तो you can assume 4 years, you can assume 5 years, whatever you want. So ICI assume 3 years. So number of years of purchase, you just multiply by 3 years, you will get the goodwill. So 136 into 3 is using कौन सी method? Weighted average method. Now second method is, so first method over, second method super profit method. Second method is super profit method. Any difficulty in weighted average method beta? Tell me fast. Weighted average method में कोई भी difficulty है आपको? Weighted average method में any difficulty? Fast. Yes बेटा, ले लूंगा, don't worry. भूमिका में 11 नंबर कल ले लूंगा, डोंट वरी. No doubts. Yes beta, you can assume 4 years, you can assume 5 years, no problem in that. Lakshita, yes, very good beta. चलो, वेट्स बेटा 1 2 3 4 ही लेना है. Second one, super profit method. Super profit beta. Now how to solve this question? I am telling you steps. See how to solve. I will tell you how to solve. Goodwill is equal to, in exam presentation I am telling you, super profit into number of years of purchase. Number of years of purchase we assume 3 years. Super profit beta, you can use step number 1. After 3 lines, step 1, super profit, which is equal to, yes, what is the formula? Actual profit minus normal profit. Actual profit here is very, very important. We will consider weighted average profit, which we already calculated above. Assume actual profit. We do not know actual profit, so we will consider weighted average profit minus normal profit. We are not aware about normal profit. So step number 2. Step number 2, normal profit. How to calculate normal profit beta? It's a capital employed into NRR. What is the capital employed? Capital employed is 5 lakhs and NRR is 20%. So 5 lakhs into 20%, you are getting the answer 1 lakh. 1 lakh means super profit 36,000 and 36,000 into 3 years. So 36 into 3, 108. So your answer is 1,08,000. This is how you are going to present your answer. Goodwill, super profit into number of years of purchase. Super profit is actual profit minus normal profit. Normal profit in step 2 is capital employed into NRR. So this is how you are going to present your answer. Super profit answer 1,08,000. Any difficulty? 1,08,000. Second method over. Second method over. Third method is annuity method. Understand annuity method. Weighted average profit gives you 36,000 every year. Super profit. Super profit 36,000. And for how many years you are going to receive this? 36,000, 36,000, 36,000 for next 3 years. 1, 2, 3. Next 3 years you are going to receive this super profit. Then what is annuity factor? Annuity factor, after 1 year you are getting 20% is a discounting factor.
not annuity factor. Here I will use discounting factor. Discounting factor. So 36,000 आई एम गेटिंग आफ्टर 1 ईयर. सो 1 रुपया मुझे 1 साल बाद मिलेगा 20% से, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? सो 1 डिवाइड बाय 1.2. यू ऑलरेडी स्टडीड इट इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी 8.8333 0.6944 एंड वापस इज इक्वल टू करने के बाद 5787. एंड नाउ मल्टीप्लीकेशन 36,000 into 0.8333. So this is 29,999. Then 0.6944 into 36,000, 24,998, and 0.5787 into 36,000, 20,833. Total of this 75,830. So it is a correct answer. 834. 36,000. I'm getting after 1 year, I'm getting after 2nd year, I'm getting after 3rd year, or you can use Calci shortcut. So Calci shortcut, 36,000 in 3 years. So Calci shortcut 1 divided by 1.2 because 20% is equal to M plus for 3 times. 3 times Q, क्योंकि 3 number of years of purchase. Then memory recall into 36,000, you will get the answer. So let's take on Calci. 1 divided by 1.2 is equal to M plus, is equal to M plus, is equal to M plus. Memory recall 2.1064 into 36,000. Directly you will get the answer 75,833. You can use the Calci shortcut. Mathematics में already that faculty has covered. Annuity. Annuity is very, very important. So 1 divided by 1.2 is equal to M plus. You have to do it for 3 times because you are getting the same amount. 36,000, 36,000, 36,000 for next 3 times, and memory recall into 36,000, you are getting the answer 75,833. You can write this shortcut. You can write this shortcut. Yes, shortcuts you have to write. Sir, one more time example of discounting factor. Discounting factor देखो बेटा, एक बार हिंदी में बता देता हूँ. डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब 1 रुपया. डिस्काउंटिंग फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? मुझे 1 रुपया आफ्टर 1 ईयर मिलेगा, तो उसकी आज की वैल्यू कितना है? 20% से. तो मैं आज कितना इन्वेस्ट करेगा? 0.8333. मैं आज इन्वेस्ट करेगा 6944, तो 2 साल बाद के बाद मुझे 1 रुपया मिलेगा. आज मैं इन्वेस्ट करेगा 5787, तो 3 साल बाद मुझे 1 रुपया मिलेगा. तो ये 3 साल बाद, तो ये 1 रुपये से कंपेयर होती है, और इनका मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आता है, ये तो मैथ्स में हुआ रहेगा ना आपका, ये मैथमेटिक्स में ऑलरेडी कवर्ड हुआ रहेगा. तो 36,000 मुझे कब मिलेगा? 1 साल बाद, तो उसकी आज की वैल्यू है 29,999. 2 साल बाद 36,000, तो उसकी आज की वैल्यू है 24,998. मल्टीप्लाई करना है. और यदि आपको ये नहीं करना है तो आपका एक कैल्सी का शॉर्टकट है 1 डिवाइड बाय 1.2. देखो आज की वैल्यू निकालनी है, कल 1 रुपया मिलेगा, तो बट ऑब्वियस डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड का भी लॉजिक है, बिकॉज यू आर गेटिंग 1 रुपया आफ्टर 1 ईयर, सो इट्स टुडेज वैल्यूज इज ऑलवेज लेस. टुडेज वैल्यूज इज ऑलवेज लेस. तो आज की वैल्यू उसकी 1 डिवाइड बाय 1.2 इज इक्वल टू, एक बार हुआ तो मेमोरी प्लस, वापस इज इक्वल टू एम प्लस किया तो दूसरे साल का, वापस इज इक्वल टू मेमोरी प्लस किया तो तीसरे साल का. तो ये तीनों को मैंने ऐड किया, ये तीनों की टोटल. मैथमेटिक्स का सिंपल फॉर्मूला है. सो तीनों की टोटल इसलिए मेमोरी प्लस में डालना है, एंड देन 36,000 से मल्टीप्लाई करना है. जो भी टोटल आएगी उसको मेमोरी रिकॉल, एमआरसी करके बटन है वो दबाने का, एंड 36,000 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द आंसर 75,833. सो दिस इज शॉर्टकट ऑफ कैल्सी. सो 1 रुपए की आज की वैल्यू कितनी? 1 रुपए की, ये मैथमेटिक्स है बेटा. अरे एन्युइटी कितने सॉल्व किए रहेंगे आपने? प्रेजेंट वैल्यू. सो 1 रुपया मुझे 1 साल बाद मिलेगा, तो उसके आज की वैल्यू कितनी है? 0.8333. कैसे निकाला? 1 डिवाइड बाय 1.2. अभी डोंट टेल मी कि आपको मैथ्स के शॉर्टकट्स पता नहीं है. ओके. फ्यूचर वैल्यू में पावर लेंगे. यस बेटा, रेस 2 करेंगे, एंड प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू कम रहने वाली है तो डिवाइड करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. अरे हर एक का चीज का लॉजिक है. एवरीथिंग इज लॉजिकल. क्या है, आप लोग है ना थोड़ा दिमाग नहीं लगाते, इसलिए आप, कोई फैकल्टी क्यों सिखाएगा भाई? आप फॉर्मूला बता दिया, अब उनका काम हो गया.
आपको सिर्फ इतना समझ, लॉजिकल क्यों नहीं करते, डिवाइड क्यों किया, डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 रुपया आज की वैल्यू नहीं है, 1 रुपया कल की वैल्यू है। तो आज की वैल्यू कितनी होगी 20% से, तो आज मैं 0.8333 इन्वेस्ट करेगा ना 20% से, तब जाके मुझे 1 रुपया मिलेगा। Sir, suppose in exam we solve the full sum and it's all correct, but goodwill calculation और बैलेंस शीट ऑफ टोटलिंग ये आपका रॉन्ग हो गया, तो भी आपको स्टेप मार्क्स मिलते हैं ना भाई, यू विल गेट स्टेप मार्क्स इफ यू सॉल्व, गुडविल कैलकुलेशन गलत भी हुआ बट रिवैल्यूएशन यू सॉल्व करेक्टली, तो यू विल गेट स्टेप मार्क्स, डोंट वरी बेटा, स्टेप मार्क्स तो होते ही है। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, व्हाट इज द डिफरेंस, कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड, नॉर्मल कैपिटल, लास्ट मेथड नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल वी आर नॉट अवेयर, सो स्टेप 1, एक्चुअल कैपिटल 5 लाख। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आप लोग है ना थोड़ा भी दिमाग यूज नहीं करते, व्हाई वी आर सीए, दो वी हैव नॉट गॉट facilities like you, still we are chartered accountants because we have brain, we can apply it, okay, but आपको, मुझे समझ में नहीं आता कि आप में से कुछ बच्चे क्यों अप्लाई नहीं कर सकते आपका माइंड, थोड़ा सा यार आपके लिए मैं और क्या करूं। नॉर्मल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगा, नॉर्मल कैपिटल सर ऑलरेडी आई टोल्ड यू, प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, कल का सेशन देख लेना, प्रॉफिट इज 1,36,000 डिवाइड बाय 20%, 20%, so 1,36,000 divided by 20%. Many students answer it 6,80,000. So 1,80,000 is a goodwill. 1,80,000 is a goodwill. Khatam. Okay. So if you want my answer, so calculation of goodwill using different methods. Assume 3 years. So please take a screenshot of unit 2. Yes, so now we are going to solve one more illustration, that is 2, and tomorrow we are going to solve goodwill treatments and admission. Admission के 6 sums complete करना आज. At least minimum questions, 6 questions you please try it at home. Tomorrow we are going to solve it. So please at least try to read all these questions. Yes. Last question of the day, illustration number 2. Illustration number 2. A category question. A category question. Take a screenshot. Yes. Any other difficulty, beta? Adisha, Chahal, Soni. I know partnership थोड़ा सा boring part है, but we do not have any other option बेटा, partnership ये करना ही पड़ेगा। अरे इतने सारे क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक जगह पे और पूरा सिलेबस एक जगह पे है। The following particulars are available in respect of business carried by the Radford. Okay, Radford. Capital invested. कितना है capital invested? 1,50,000. So capital invested is 1,50,000. Okay. Trading results. Profit, profit. Loss. Loss bracket में लिख रहे, bracket में लिख loss. Okay, हो सकता है loss 2019. Okay. Market rate of return on investment. See, market में 10% मिल रहा है. Now, what is the risk rate of risk on return? See, if I invest in the bank, I will get 6% returns. If I invest with my friend, I will get 12% returns. Why I'm getting 6% extra? Because I'm taking a risk. Okay, तो मेरे friend के पास मैं risk ले रहा हूँ, तो वो मुझे 6% extra दे रहा है. Bank is a safe way. तो safest way होगा तो 10% मिलेगा market में. But you are entering into the partnership, so 2% extra. So how much return you should get? 12%. 12% you should get. So this is normal rate of return. Okay. So 12% is 10% plus 2%. So that is a 12% is normal rate of return. तो आपको एक याद रखना है कि 12% रिटर्न क्यों मिलेगा, क्योंकि 10% रिटर्न ये नॉर्मली मिलता ही है, 2% एक्स्ट्रा आपने रिस्क लिया, रिस्क है तो इश्क है, तो आपको ये पता ही है ये डायलॉग, तो रिस्क है तो रिटर्न्स है, हमारा रिटर्न्स है, हमारा इश्क नहीं है, रिस्क है तो रिटर्न्स है, सो 10% प्लस 2%, ये आपको याद रखना है। सो वी आर टेकिंग रिस्क एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा रिटर्न। सो नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल मार्केट में कितना परसेंट रिटर्न है? 10%, बट यू आर गेटिंग 2% एक्स्ट्रा बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। एंड नाउ व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? सपोज इफ आई इन्वेस्टेड
आई हैव नॉट डन द बिजनेस, मैं बिजनेस नहीं किया, मैंने कोचिंग क्लास नहीं लिया, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने जॉब किया, तो जॉब किया तो क्या होगा, आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, दैट इज 6,000 per annum. Okay, 6,000 per annum I am getting the remuneration, and that 6,000 per annum it is not engaged in the business, so I am getting 6,000 extra. Okay, so this is the opportunity investment, opportunity cost. क्या बोलते हैं इसको, opportunity cost. और इसका क्या करना है थोड़ी देर में बताया जाएगा. Opportunity cost. सी सुपर प्रॉफिट बेसिस पे ये कैलकुलेट करना है. कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट बेसिस. So now what are the steps बेटा, what are the steps, how to calculate. Goodwill is equal to, क्या steps बताया मैंने, you have to write like this, super profit into number of years of purchase. थक गए मुझे पता है, थक गए हैं, बट यस वेट फॉर 2 minutes, हो गया, खत्म खत्म खत्म. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया है, 5 years. सुपर प्रॉफिट पता है आपको, नहीं, सुपर प्रॉफिट नॉट नोन. सो आफ्टर 2 lines, step 1, सुपर प्रॉफिट. हाउ टू प्रेजेंट आंसर, यू गॉट दिस, सुपर प्रॉफिट. बेटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, टुडे प्रैक्टिस. एक्चुअल प्रॉफिट minus normal profit. Today you have to write all TYK questions of unit 1 and first 2 questions of unit 2. Fair में actual profit minus normal profit. Actual profit बेटा कैसे निकला, using simple average. Why simple average, no trend, बीच में loss है ना बेटा. So 40,000, 36,000, 6,000 loss plus 50,000 divided by कितना, divided by 4 minus normal profit. Normal profit we are not aware. Step number 2. Step number 2, normal profit. Okay, capital employed into NRR. Capital employed into NRR. What is the capital employed, 1,50,000. And what is NRR, red pen, 12%, 18,000. You can check, 1,50,000 capital employed, 12% NRR. And super profit निकालते time, here you have to deduct opportunity cost. And what is opportunity cost, 6,000 rupees. If I invest, if I given time to other, 6,000 mera opportunity cost that I lost. 40 plus 36 minus 6. So this is red pen adjustment, plus 50 divided by 4. I'm getting 30,000, but opportunity cost is 6,000. And then normal return, normal rate of return is 18,000. So I'm getting super profit 6,000. I'm getting super profit 6,000, and that super profit multiplied by 5, I will get 30,000. The super profit. So what is new concept here, beta? What is the new concept? New concept, just quickly revise it. Super profit is equal to actual profit minus normal profit and opportunity loss, and normal rate of return is equal to market investment plus risk rate. A category question. Super profit method. So what is new concept? Opportunity lost. Opportunity loss. We deduct it. Opportunity loss is deducted from actual profit. Is deducted from actual profit, and NRR is market return plus risk rate. 2%. 2% उसमें add करना है. So beta, I hope you enjoyed this session. Tomorrow we are going to solve some goodwill entries. So कल का session ये goodwill होगा. I know now you have given beta almost 2 hours and 30 minutes. थोड़ा ब्रेक भी थोड़ा कम था, और मेरे साइड से थोड़ी गलती भी हो गई थी, लैपटॉप का चार्जर गया था. बट आफ्टर दैट 1.5 hour आपने बहुत ज्यादा क्विकली, और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन आफ्टर द सेशन, ट्राई टू रिकॉल फ्रॉम TYK1, weak, able, lazy, interest on drawing calculation, rectification problem, then that 11,000, 10,000 rupees का, प्लीज रिकॉल इट. जितनी बार रिकॉल करोगे उतना अच्छा होगा. एंड बेटा प्लीज डोंट गिव अप. 5 क्वेश्चंस हमने किए हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस, दैट इज TYK के 3 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट. आई नो टाइम इज लेस,
बट योर डिवोशन इज हाई। ओके, सो मिलते रहेंगे, कल मिलना है, ब्रेक नहीं है हमारा एक भी दिन अप टू फ्राइडे। सो कल और एंजॉय करेंगे, कल वेडनेसडे है, सो कल और ज्यादा एनर्जी से, कल तो फुल डे प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स है, कल कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो कल प्रॉब्लम्स, परसों प्रॉब्लम्स, थर्सडे तक प्रॉब्लम्स, एंड सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे हम लोग देखते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ की थ्योरी प्लस प्रॉब्लम्स ऑन मंडे। ओके, सो 2 दिन मिलेंगे रिटायरमेंट और डेथ के लिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड से बाय बाय। ओके, चलो रिव्यूज देते रहिए अच्छे से एंड शेयर कीजिए लेक्चर टू मैक्सिमम योर फ्रेंड्स।